Good morning, student. Welcome, students, to the 8th chapter of History of Standard 9th. So, name of the chapter is Industry and Trade. Now, children, industry and trade now both are playing a very important role in the development of the country, because if the industries are more, so more goods will be produced, and if the production is more, so trade will be more. We are going to export more, and because of that, the country is going to develop. So, both are very much important in the development of a country. So, in this chapter, we are going to study about the different industries. Now, in this chapter we are going to gather some information about industry and trade in India in the post-independence period. So, after independence, after we got the independence, so which are the various industries and how we are trading, so that we are going to study in this chapter. Now, after India became independent, the Industrial Finance Corporation of India was established in 1948 with the purpose of making available long-term loans to industrial projects. Now see children, before we got the independence 1947 के भी पहले industries थे इंडिया में, only few industries were there. But after we got the independence, so after that many industries were set up, and for that purpose, for the development of the industries, no, here the Industrial Finance Corporation of India was established, that is in the year 1948. Now इनका intention क्या था? So the main intention was making available long-term loans to the industrial projects. So what this Industrial Finance Corporation of India was established for what purpose? To provide loans to the जो अलग अलग industrial projects बनते थे, so to provide loans to them so that they can employ more people, more goods can be produced. Similarly, the Industrial Development Corporation was established in 1954 in order to bring about greater development of the industrial sector. And other, that is another Industrial Development Corporation उसको भी form किया था, that is in the year 1954, and here the intention was to bring about greater development of the industrial sector. So Industrial Development Corporation, it was set up for doing the planning, मतलब कौन सा टाइप की इंडस्ट्रीज कहाँ पे कैसे सेटअप करना है, for that purpose. So it was set up in the year established in the year 1954. So after we got the independence, so Industrial Finance Corporation, it was established in India in the year 1948, or Industrial Development Corporation, that is for doing the planning, it was established in the year 1954. और Industrial Finance Corporation of India क्या काम करते थे? They used to provide loans to the industries, and Industrial Development Corporation, it was doing the planning of for the development of the industrial sector. So now we are going to study about some of the industries in India. So first we will be studying about the textile industry. Now textile industry forms 14% of the total industrial production. Textile industry clothes, जिससे clothes बनते हैं, जैसे कि cotton clothes वगैरह और दूसरे synthetic fibers वगैरह है, that is included. So textile industry, जो total industrial production है, so in that the textile industry, it is contributing how much percent? 14%. So it includes the power loom and the handloom industry. So both is included here, power loom industries and the handloom industry. Power loom मतलब जो machines से बनते, and handloom industries made with the, that is work that is done with the hands. The handloom industries are labor intensive. Labor intensive मतलब here in that who is working? Laborers are included. Laborers, they are doing the work. According to the Textile Committee Act 1963, a textile committee has been established, and this committee sets the quality of standards for textile manufactured for sale in the internal market as well as for export. So Textile Committee Act एक law बना था in the year 1963. So this टेक्सटाइल कमिटी का जो बना था ना, सो दैट दिस कमिटी दे यूज्ड टू सेट द क्वालिटी, मीन्स उन लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू सी द क्वालिटी ऑफ फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो गुड्स रॉ मटेरियल निकलते थे उसका क्वालिटी क्या है, दे यूज्ड टू चेक फॉर बिफोर फॉर द मैन्युफैक्चर. जो भी गुड्स बनते थे ना, दैट हैज़ टू बी सोल्ड विद इन द कंट्री, और जिसको हमको एक्सपोर्ट करना है तो उसका क्वालिटीज चेक करते थे, वेदर इट इज़ गुड और नॉट फॉर द प्रोडक्शंस. So वहाँ से अगर if that committee is going to approve, so that if that goods can be used, जैसे कि mostly you must have seen बहुत सारे गुड्स पे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे ISI मार्क वगैरह होते हैं. सो इट मीन्स दैट इट इज़ ऑफ द गुड क्वालिटी. नेक्स्ट इज द सिल्क इंडस्ट्री. Now silk industry, OB, this industry functions under the Ministry of Textiles. Now silk industry, silk clothes बनते हैं, बहुत expensive clothes they are, and this in silk industry, it is functioning under the Ministry of Textiles. The research about the species of the silk
worm and the mulberry trees is done in the Cerebetic Research Laboratory at Bengaluru. So ये जो सिल्क वर्म है, सो ऑन देम सिल्क वर्म मोस्टली दे आर फाउंड ऑन द मलबरी ट्रीज के ऊपर मिलते हैं. सो इसके ऊपर रिसर्च चालू है अबाउट द स्पीशीज दैट इज वेराइटीज, उसके बहुत सारे वेराइटीज होते हैं. सो कौन से गुड क्वालिटी के सिल्क वर्म है और मलबरी ट्री से, सो उसके ऊपर रिसर्च कहाँ पे हो रहा है, सेरेबेटिक रिसर्च लैबोरेटरी दैट इज सेटअप एट बेंगलुरु. नाउ दिस इंडस्ट्री इज प्राइमरली इन द स्टेट्स ऑफ, कहाँ पे मिलेंगे, इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर. Now it is begin spread in the state with predominantly tribal population. Mostly यहाँ अभी वो कहाँ पे इंडस्ट्री स्प्रेड हो गए हैं, इन द स्टेट्स अदर स्टेट, मतलब स्टेट्स में जो स्प्रेड हुए हैं वहाँ पे इट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू होम टू द ट्राइबल पॉपुलेशंस. नेक्स्ट इज जूट इंडस्ट्री. जूट इंडस्ट्री इट इज़ द टॉप रैंकिंग, इंडिया इज़ द टॉप रैंकिंग कंट्री इन द जूट प्रोडक्शन. सो इंडिया इसमें टॉप रैंकिंग में आता है इन द जूट प्रोडक्शन. फर्स्ट पे कौन है, बांग्लादेश. So India is a major exporter of jute products. We get cloth, sack cloth, जो गनी बैग्स वगैरह रहते हैं, ये गोनी बोलते हैं हम लोग, ropes from jute. Next here it is, do you know में mega cluster is a scheme that helps weavers through self-finance groups and non-governmental organization. Now mega cluster it is a scheme. Mega cluster में क्या हो जाता है, जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज रहते हैं, they are coming together and they are helping the weavers, जो काम करते हैं ना, so थ्रू सेल्फ फाइनेंस, मतलब अपना ग्रुप बनाते हैं, दे आर सेल्फ फाइनेंसिंग देमसेल्व्स, और दूसरे कुछ एनजीओस रहते हैं, दे आर हेल्पिंग. हेल्प इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, सो व्हाट टाइप ऑफ हेल्प दिस वीवर्स दे आर रिसीविंग. कभी उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, सो दैट रॉ मटेरियल्स विल बी प्रोवाइडेड. डिज़ाइन बैंक्स, डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी इज नीडेड, अनदर वेलफेयर ऑफ द वीवर्स जो काम करते हैं उनको अगर कोई और हेल्प चाहिए, इफ एनी अदर हेल्प इज नीडेड, सो दैट विल बी प्रोवाइडेड. अभी जैसे मेगा क्लस्टर्स जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो एक साथ आके जहाँ पे सेटअप होते हैं, फॉर हियर वी कैन टेक एग्जाम्पल, जैसे भिवंडीज में बहुत सारे इंडस्ट्रीज मिलेंगे, सोलापुर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सूरत, यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, एक जगह पे सेटअप हो जाते हैं जहाँ पे उनको ऑल द फैसिलिटीज दे आर गेटिंग. नेक्स्ट इज हैंड स्कल्पटिंग. Now this is a labor intensive craft. Sculptors got employment due to the capacity of the crafts to observe more craftsmen, small investment, more profits, preference to exports and possibility of earning more foreign exchange. Now hand sculpting किसका, hand sculpture मतलब कुछ भी मूर्ति वगैरह बनाना, जैसे कि वुड्स के भी बन सकते हैं, स्टोन्स के भी बन सकते हैं. सो लेबर इंटेंसिव है. और यहाँ पे स्कल्पचर्स मीन्स इफ द पर्सन इज स्किल्ड, उसके पास स्किल है, सो ही कैन डू द वर्क, he can get the employment due to the capacity of the craft to observe more crafts. मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे क्राफ्ट्स में लगते हैं, इन्वेस्टमेंट कम लगता है, एंड मोर प्रॉफिट्स इज देयर, एंड मोस्टली इट कैन बी एक्सपोर्टेड, एंड इफ इट इज़ एक्सपोर्टेड सो मोर फॉरेन एक्सचेंज कैन बी अर्न. जैसे कि अगर मैंने आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सम स्कल्पचर वर्क, आई एम गोइंग टू मेक, एंड आफ्टरवर्ड दैट आई वांट टू सेल टू अमेरिका. तो अमेरिका में अगर मैं अमेरिका में सेल कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, द अमेरिका इट इज़ गोइंग टू पे मी इन डॉलर्स. सो डॉलर्स मेरे पास डायरेक्टली आएगा, नो दैट हैज़ टू बी एक्सचेंज विद द इंडियन गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, एंड गवर्नमेंट इन टर्न इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड मी दैट मनी इन रुपीज़. एंड आफ्टरवर्ड्स इफ आवर कंट्री वांट टू डू द, जब हमारी कंट्री अमेरिका से ट्रेड करेगी, सो दैट डॉलर इट विल बी यूज्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज द फॉरेन एक्सचेंज. Now several cities have market mechanisms like Delhi Hut, which enables the craftsmen from rural and urban areas to get a market for their wares. Wares means products. अभी कुछ सिटीज़ है कहाँ, वहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म कल डेली कॉलेज है दिल्ली हट. दिल्ली हट मतलब फेयर मेला जैसा लगता है ना. तो वहाँ पे क्या होता है, मीन्स क्राफ्ट्समैन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, फ्रॉम डिफरेंट रूरल एरियाज, अर्बन एरिया से एक जगह पे आते हैं, एंड दे गेट ए मार्केट, एंड फ्रॉम देयर दे कैन सेल द प्रोडक्ट्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मुंबई में हियर वारली पेंटिंग वगैरह, सो मोस्टली अगर उसको ख़रीदना है तो कहाँ, वी हैव टू गो इनटू द दैट एरियाज, धानु वगैरह साइड में मिलते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, बट तो वहाँ पे ज़्यादा खर्चा होगा. बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ इन मुंबई ए प्लेस विल बी सेलेक्टेड, एंड देयर द क्राफ्ट्समैन विल बी गिवन द परमिशन दैट दे कैन कम एंड सेल देयर गुड्स देयर. वाली पेंटिंग अपने आके वहाँ पे सेल कर सकते हैं. So Mumbai, because here people those who are living in Mumbai, they will be also getting a market nearby only, and they can buy the paintings from there. So it will be good for both, that is for the customers also and for the craftsmen also. Next is automobile industry. Now India is one of the major product producers of vehicles. Vehicles are exported to 40 countries from India. कितने countries को, 40 countries को. The automobile industry is called as the sunrise sector in India. India's tractor industry is the biggest in the world.
1/3 of the tractors manufactured worldwide are produced in India. कितने? 1/3 of the tractors manufactured worldwide कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? इंडिया में. Tractors manufactured in India are exported to Turkey, Malaysia and several countries in Africa. Next is cement industry. Now the role of cement industry is important in the development of हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो सीमेंट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? हाउसिंग वगैरह के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, हाँ सबके लिए क्या यूज़ होता है? सीमेंट इंडस्ट्री. So this industry is one of the most technologically advanced industry. India is currently an important producer of cement in the world. So in this cement industry कहाँ किस लिए यूज़ होता है? हाउसिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. And India is one of the most important producer of cement in the world. Next is the leather industry. Now leather industry, it is a big industry in India. It is primarily export oriented. मतलब leather industry, leather से जो भी goods बनते हैं mostly they are exported. And there is salt industry. Now India is one of the top producer of salt in the world. The annual production of salt in India is 200 lakh tons. So annually हम लोग कितना salt produce करते हैं? 2 lakhs tons. And the production of iodized salt is 60 lakhs tons. Iodized salt कितना बनता है? 60 lakhs tons. Now salt so सबको basic ज़रूरत है. Everybody is needing the salt in the food we are needing. Bicycle industry. Now India is a leading producer of bicycles in the world. So India is leading in which industry? Bicycle industry. Bicycles are made up in the states of Punjab and Tamil Nadu. So mostly where it is manufactured? In the states of Punjab and Tamil Nadu. The main center of bicycle manufacturing in India is Ludhiana. तो यहाँ पे मेन सेंटर जो बाईसाइकिल कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? दैट इज एट लुधियाना इन पंजाब. इंडिया एक्सपोर्ट्स बाईसाइकिल्स टू कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, मेक्सिको, केनिया, युगांडा एंड ब्राज़ील. सो वी एक्सपोर्ट, आवर कंट्री एक्सपोर्ट्स bicycles to other countries. So mostly which countries they are importing from us, they are buying from us? Nigeria, Mexico, Kenya, Uganda and Brazil. And there is Khadi and Village Industry. The Khadi and Village Industries Commission was established to give impetus to industrialization in rural areas. So the Khadi and Village Industry जो commission बना था, it was formed, it was established to give boost, encourage the industrialization, mostly to encourage the industrialization in rural areas. The main objectives behind the establishment of the corporation was to develop the traditional industries. So ये कॉरपोरेशन जो एक कमीशन फॉर्म हुआ था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ का, जो तो मेन ऑब्जेक्टिव इंटेंशन क्या था? टू डेवलप जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, टू डेवलप दैट हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड टू एनकरेज इंडस्ट्रीज दैट यूज मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल एट द लोकल लेवल. सो टू प्रोवाइड एनकरेजमेंट टू सच इंडस्ट्रीज जो वहाँ के ही लोकल लेवल के ही जो रॉ मटेरियल्स को और ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. And make the villages self-reliant by creating employment and making the village people self-reliant, that is self-dependent, by creating employment. मतलब वहीं पे in villages only if employment opportunities are going to be made available in the rural areas, so their earnings is going to increase. So the village people will become self-dependent. Next is agriculture. Now in India, agriculture is practiced using traditional and modern methods. So India में agriculture, it is done by both the methods, traditional method also and modern methods also. Now many agricultural tasks are performed using bullocks. Similarly, machines are being used in different tasks. So nowadays what is used? Machines use करते हैं for doing the different tasks, works in agriculture, जैसे कि plowing के लिए tractors वगैरह use करते हैं, for sowing, हार्वेस्टिंग के लिए, कट करने के लिए, थ्रेशिंग मतलब सेपरेट ग्रेन्स, फूड जो ग्रेन्स रहते हैं उसको सेपरेट करने के लिए. Now the major occupation in India is agriculture and the task based on agriculture. So in our country we all know that more than 60% of the people they are doing what? Agriculture and other works that is based on agriculture. Agriculture and animal husbandry are practiced in villages. 70% of Indian society depends on jobs related to agriculture and agriculture production. तो कितना परसेंट एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं? 70%. That is they are doing the work, they are dependent upon agriculture and agricultural production. So in this industry the participation of women is equal to that of men. So यहाँ पे दोनों equal participate करते हैं. कौन? Both men and women. Now agriculture is practiced in different seasons in India. So different seasons में different crops are cultivated. Many varieties of crops are grown. For example, jawar, wheat, rice, pulses, oil seeds. So they are mainly produced.
Along with that, cotton and sugarcane are processed to manufacture cloth and sugar respectively. So different crops हम grow करते हैं, जैसे कि जवार हो गया, wheat हो गया, rices, pulses, oil seeds are produced in our country. उसके साथ साथ cotton और sugarcane, so they are also produced, and from that what we are getting, from cotton we are getting clothes, and sugarcane से क्या मिलता है, sugar. Agriculture also includes the production of fruits and vegetables. Nowadays industries processing these fruits and vegetables have come up. So agriculture से हमको from agriculture we are also getting the production of fruits and vegetables, and nowadays means that industries have come up. So agriculture fulfill man's basic needs. So in order to encourage farming, loans are given to farmers through rural banks and cooperative institutions. So ये from the agriculture, मतलब जो हमारी basic चीज़ें हैं, फूड एंड ऑल, दैट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द एग्रीकल्चर, फार्मर्स के थ्रू ही सेटिस्फाइड होता है. सो फॉर दैट पर्पज नाउ इट इज द फार्मर्स नो दे आर प्रोवाइडेड लोन्स. सो वो लोन्स ईजिली दे आर मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स एट द रूरल बैंक्स, और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए, फ्रॉम दैट दे आर गेटिंग द लोन्स. स्टडी विजिट्स, एग्रीकल्चर आउटडोर ट्रिप्स एंड फार्मर्स गेट टुगेदर्स आर ऑर्गेनाइज थ्रू द पंचायत समिति टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर. So for increasing the production and improvement and bringing about improvement in the agriculture, how more production can take place. So for that purpose no, nowadays farmers उनको study visits के लिए लेके जाया जाता है. Outdoor trips are arranged for the farmers, and farmers के get togethers भी organize होते हैं, so that there can be exchange of ideas and they can exchange their knowledge and improvements can be brought in agriculture. Now tools and implements, seeds and fertilizers are also supplied. So seeds and fertilizers are also supplied to the farmers, and farmers are given training regarding soil testing, nursery of fruit plants, piscicultures, poultry, cattle and goat rearing, dairy farming, etc. So moreover farmers को training दिया जाता है related with what, soil testing, to test whether the soil is fertile or not. So through that they can come to know the fertility of the soil. Nurseries of fruit plants, फ्रूट के प्लांट्स के कैसे लगाए जाते हैं, हाउ अबाउट दैट. पीसी कल्चर मतलब ब्रीडिंग रियरिंग ऑफ फिश, आर्टिफिशियली कैसे कर सकते हैं, दैट. पोल्ट्री, कैटल एंड गोट रियरिंग के बारे में. डेयरी फार्मिंग दैट इज रिलेटेड विद द मिल्क्स, डक्स रिलेटेड है दैट. नाउ गाइडेंस इज गिवन टू द फार्मर्स by a district level training institute. So these guidance are provided to the farmers by what, by a district level training institutes. Financial help is given to build warehouses for storing the farm produce. Along with that, financially मतलब money help is provided to them to build up warehouses. मतलब godowns वगैरह बना सकते हैं, so that the whatever they are going to produce, so that can be stored and kept. India is rapidly becoming independent in food grain production and farming techniques. So in today's period it is told that India is rapidly fastly going on becoming independent. हम independent हो गए किसके, इसमें food grains productions को लेके and farming techniques. Modern techniques like drip irrigations, organic farming are used for farming. Drip sprinkle के वाले जो how much water used, so through that we can save the water also, and that much water can be made available to the crops. जितनी उनको ज़रूरत है that much water can be used. Organic farming is also used for farming. Organic मतलब fertilizers जो organic based होते हैं ना, so that type of fertilizers can be used for doing the farming. Next is policy of the central government. Now in the fourth 5-year plan, focus was placed on proper paper industry, pharmaceutical industry, motor tractor industry, leather goods, textile industry, food processing industry, oil, color, sugar industries, etc. Now see, already we have studied about the various plans. 9 plans के बारे में हम लोग पढ़ा है. So in that ना fourth 5-year plan था. So in that, yeah, the government they have focused on some of the industries. So which industries were included? Paper industry, pharmaceutical industries, motor tractor industry, leather goods, textile industry, food processing industry, oil, color and sugar industry पे focus किया था government ने. According to the industrial licensing policy of 1970, all those factories requiring an investment of more than 5 crore rupees were to be included as heavy industries. So according to the industrial licensing policy जो बना था 1970 में, so according to that जो भी factories है where the investment is needed, जो भी industries में factories में investment more than 5 crores का लग रहा है, so that industry factories will be coming under the heavy industry.
So the big industrial houses and foreign companies were allowed to invest in heavy industries that were not reserved for public sector. So जब बड़े बड़े जो big industries houses है ना and foreign companies जो है, so they were given the permission that they can invest their money in the heavy industries जो public sector के अंदर नहीं आते. As a result of this policy, by the end of 1972, 3,18,000 small industries were registered with the government registration ऑफिस. सो 1972 के आसपास एंड में 3,18,000 स्मॉल इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हो गए थे विद गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस. नेक्स्ट इज द मिनरल वेल्थ. नाउ द अवेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स आयरन एंड कोल्स प्लेस ए मेजर रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अभी मिनरल्स जैसे आयरन है, कोल है, इंडस्ट्रीज के लिए लगते हैं, सो दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Now we have adequate stores of iron, manganese, coal and mineral oil in our country. So in our country we can find sufficient stores minerals के, जैसे iron है, manganese है, coal है, mineral oil है. So here these are the different minerals that are found sufficiently in our country. Next है forest resources. Now government has reserved some forest for the industry based on forest. सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सम फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट एरियाज को क्या किया है, इट हैज़ बीन रिजर्व फॉर क्या, कुछ इंडस्ट्रीज बेस्ड फॉरेस्ट है ना, जिनको रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलते हैं. सो दैट आर रिजर्व by the government. The task of conservation of forest is done by the central government, state government and by the local people. So who is doing the looking after that forest? Central government भी देखभाल करती है, state government also, and the local people, those who are residing there. Now forests are necessary for the raw materials for industries like construction, paper, newsprint, silk, matchboxes, medicinal herbs, honey, lacquer. लैक्वर क्या होता है, एक हार्ड ग्लोसी जैसे ना फर्नीचर्स के लिए लगाने के लिए लगता है ना, जो ग्लोसी सब्सटेंस दैट, एंड रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर ए पेंट. सो फॉरेस्ट किसके लिए इम्पोर्टेंट है, फॉरेस्ट बहुत मीन्स वी आर गेटिंग द रॉ मटेरियल्स, जैसे कि फॉर इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शंस के लिए लकड़ी, एंड पेपर, न्यूज़ प्रिंट के लिए, मैच बॉक्सेस, मेडिसिनल हर्ब्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन जिससे बनते हैं ना, हनी, लैक्वेयर एंड रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर पेंट के लिए जो लगता है. सो फिशरीज इंक्लूड सी वाटर फिशेस एंड फ्रेश वाटर फिशेस फाउंड इन रिवर, कैनल्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. सो फिशरीज दोनों टाइप के फिशरीज इंक्लूड करते हैं, सी वाटर जो खारे पानी की होती है, एंड फ्रेश वाटर फिशेस. ना हार्बर्स हैव बीन बिल्ट और ओल्ड हार्बर्स हैव बीन डेवलप, जो बंदरगाह रहते हैं ना हार्बर्स, सो उसको क्या किया है उन लोग ने बना दिया है, बिल्ड नए बने हुए हैं. अलॉन्ग विद दैट ओल्ड हार्बर्स जो है दैट हैज़ बीन रीडेवलप्ड. सो फिश सीड इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश. सो फॉर प्रमोटिंग द फिश इंडस्ट्री, सो ट्रेनिंग सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, सो दैट द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री फिशिंग इंडस्ट्रीज दे कैन ग्रो. Next is tourism. Now India has a rich natural heritage, cultural heritage. There are places of worship of different religions, pilgrim centers, confluences of rivers, forts, caves, etc. all over the country. Now see tourism. So India में tourism के लिए देखने के लिए बहुत सारे sites हैं. So for visiting that places, no people from all over the world they are coming to India. So जैसे कि बहुत सारे places of worships हैं. As a result, because in our country different religious people are living, so different religious centers are there. So for visiting the pilgrimage centers people they are coming. Confluences of rivers, रिवर्स के कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे, जैसे कि इलाहाबाद में जहाँ पे है ना, वहाँ पे तीनों रिवर, गंगा, यमुना, सरस्वती, ऑल द तीनों रिवर्स के उसको बोलते हैं संगम पॉइंट. सो वेयर दे आर मीटिंग, सो फॉर सीइंग दैट पॉइंट ऑल्सो पीपल दे आर कमिंग. फोर्ट्स देखने के लिए आते हैं, केव्स एक्सेट्रा. सो for seeing all these things people they are coming from different parts of the country. So tourists from our country as well as from abroad travel in India throughout the year. So throughout the year tourists from within the country, tourist people, and from outside the country, from abroad also they are coming for seeing these places. The facilities for tourists to stays, travel etc. are provided through the Tourism Development Corporation. Now see tourist people are coming, so for that purpose these tourist people they need स्टे करने के लिए होटल्स लगते हैं उनके लिए, ट्रैवलिंग के लिए मीन्स दे नीड व्हीकल्स, एंड ऑल्सो ऑल दिस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द टूरिस्ट पीपल थ्रू द टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. सेल ऑफ क्यूरस का मीनिंग होता है ऑर्नामेंट्स, एंड द होटल इंडस्ट्री थ्राइव्स इन टूरिस्ट प्लेसेस. जो जहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेसेस है, सो देयर नो डिफरेंट थिंग्स आर सोल्ड बाय द लोकल पीपल, जैसे कि ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं एंड अदर थिंग्स दैट दे आर मेकिंग, सो दे आर सेलिंग. So they are promoting, and because of that this industries tourist
places it is going on flourishing. In some places there are guides who give information to tourists about that area. So tourist places में mostly we can see guides रहते हैं, वो person को पूरा knowledge रहता है वहाँ के area के बारे में, हर चीज़ के बारे में, so that people they are providing informations to the people. Sometimes when vehicles don't reach the destination in some remote and difficult to reach tourist places, the local people help the tourists in return for a fee. और कुछ destination, some places are there no where vehicles can't go. So if vehicles can't go, so people they have to go by walk only. So वहाँ के जो local residents है, so that people they are guiding the tourist people to see that places, and in return they are charging money. So employment opportunities are generating out of these things. So ये सारी चीज़ें कोई जैसे क्या होता है, the local people, those who are living there, know they are getting an employment opportunity. So here so employment is increasing. Next is the import export of or foreign trade. Now when planning started in 1951, the import of industrial goods and raw material required for production increased. So planning कब start हो गया था यहाँ पे फॉरेन ट्रेड को लेके 1951. सो इम्पोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इंक्रीज. सो इंडियाज इम्पोर्ट्स इंक्लूड्स मशीन्स, आयरन, मिनरल ऑयल, फर्टिलाइजर्स एंड मेडिसिन. सो दिस आर द थिंग्स, जैसे कि मशीन्स हो गए, आयरन हो गए, मिनरल ऑयल, फर्टिलाइजर, मेडिसिन. सो दिस आर द थिंग्स वी आर इम्पोर्टिंग. And India also gave impetus to exports after independence in order to gain valuable foreign exchange. So after we got the independence, so India has encouraged the export also of goods so that we can get more foreign exchange. So India, what are the things we are exporting? जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी, spices that is मसाले, cotton, textiles, leather, footwear, pearls, precious stones. So all these things are that India is exporting to the other countries. Next is internal trade. Now India's internal trade takes place via railways, waterways, roadway, airways, etc. So India का जो internal trade है, trade that is carried out within the country from one region to other region, from one state to other state. So it is taking place how by how? Railways के through, waterways, roadways and airways के through होता है. Now ports like Mumbai, Kolkata, Cochin and Chennai are important. So these airports हैं, so through the seaways, so waterways for doing the trade through the waterways, these ports are playing a very important role. जैसे कि मुंबई हो गया, कोचिन हो गया, चेन्नई. Commodities like coal, cotton textiles, rice, wheat, raw jute, iron, steel, oilseeds, salt, sugar, etc. are included in the internal trade. So in the internal trade, what are the things that we are किस चीज़ का ट्रेड करते हैं हम लोग? कोल का, कॉटन टेक्सटाइल्स, राइस, वीट, रॉ जूट, आयरन, स्टील, ऑयल सीड्स, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा. Now due to the development of industries, the standard of the life in the country improves. So see already वैसे जैसे कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो गए, अगर if more industries are there, so it is going to provide employment opportunities to the people. So if the employment is there for the people, so standard of the life of the people is going to improve. So standard of life of the people is also going to improve and of the country is also going to improve. Many opportunities for employment become available. So if more industries are there, so more employment opportunities will be made available to the people. So on the whole, it is helping in the progress of the country. So if the country is there, so in the country, if the more industries are there, so what will happen? The country is going to make progress. The country's development will be more. So students, in this chapter we have studied about the industries, different industries, and what are the means how they are, what are the things that are manufactured, and how we are importing and exporting, and why industries are important for the country's development. So these things we have studied in this chapter. Now assignments for you students from this chapter will be, that is question number 3rd A, give reasons are there. 2 reasons are there. The tourism industry has developed a lot in India and the quality of life and standard of living of Indian citizen is increasing. That 2 reasons. And question number 3rd B, that is answer in 25 to 30 words. So in that all the 4 questions are there. So altogether 6 questions for you will be there as assignment. So hope you have understood the chapter. Thank you.